Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Viewers, today I am going to discuss what is the difference between forward contracts and future contracts. And we also discuss that whether both contracts are allowed in Islamic financial system or which one is prohibited and which one is permissible in Islamic financial system. These two contracts are very important contracts looking at both financial systems, conventional and Islamic. And usually, students seem to be confused regarding the concepts of these contracts. So, it is necessary, first of all, try to explain that what is the definition of these two contracts. तो हम सबसे पहले इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स की डेफिनेशन करेंगे ताकि ये क्लियर हो जाए कि ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से क्या मुराद है, फ्यूचर से क्या मुराद है। नॉर्मली तालिब इल्म इस बारे में कंफ्यूज दिखाई देते हैं। तो चलिए हम इनको डिफाइन पहले करें कि भाई ये है क्या। लेट्स स्टार्ट विद फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। Forward contract is an arrangement that is made over the counter and the settles just once at the end of the contract. This means that it this contract is executed between two parties. Look at here. These are the two parties. Over the counter mean through agents and brokers. Two parties enter a contract, and once they fixed price, that price cannot be changed. In future, for example, if they settled price today, if fixed settled a price, and in future whether price decrease or increase, it will not affect the contract price. Both parties involved in the agreement and negotiate the exact terms of the contract, like what will be the price, what is the date of delivery, what is the quantity of the subject matter that is going to bought. It is privately negotiated and comes with a degree of default risk since the counterparty is responsible for remitting payment. Because one if because it is a forward contract and the party will pay in advance and the other party counterparty will make delivery of the subject matter if that part, because there is a default risk, it exists that in the future maybe the counterparty default in the providing and the delivery of the subject matter, so then that party will be considered liable to pay back. So this is known as forward contract. सादा से लफ्जों में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि एडवांस में आप रकम अदायगी कर देते हैं कि जनाब मुझे मुस्तकबिल में ये कमोडिटी इतनी मिकदार में चाहिए और कीमत आप तय कर देते हैं। ये बाकायदा एजेंट्स के थ्रू या दो पार्टीज के थ्रू प्राइवेट किस्म का एग्रीमेंट होता है जिसमें दोनों पार्टी मौजूद होती हैं, आमने सामने फेस टू फेस होती हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और मुस्तकबिल में खा कीमत गिरे या कीमत ज्यादा हो, दोनों सूरतों में कॉन्ट्रैक्ट को मुकम्मल किया जाएगा। तो दिस इज द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, सो वी कॉल इट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब हम आगे चल के देखते हैं कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। व्हाट आर द फ्यूचर्स? Futures contracts are standardized contracts that trade on stock exchanges. They are settled on daily basis. These arrangements come with fixed maturity dates and uniform terms. There is a very little risk with futures as they guarantee payment on the agreed day upon date. Because here there are two parties, there is
not necessary, and there is no face-to-face here contract. They just fix a price, but that does not remain fixed. It changes on daily basis, and there is no delivery of asset, actual delivery of asset. Here what is received and what is sold, that is option. Actually, option to sell, option to buy. If the price will be increased, then I will leave the option. If price is reduced, then I will buy the option. Actually, here what is delivered, that is fluctuation between increase and decrease from the settled price. एक्चुअली दिस इज नोन एज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर दोनों पार्टी फ्रीक जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो फेस टू फेस नहीं होता, इसमें ऑप्शंस की जो है वो सेल होती है। यानी आज अगर कीमत मैं तय कर देता हूं, मुस्तकबिल में अगर कीमत बढ़ गई तो फिर मैं ये अवेल कर लूंगा, अगर मुस्तकबिल में कीमत रिड्यूस हो गई तो फिर मैं इसको छोड़ दूंगा। तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज के दरमियान होता है तो इसके अंदर एसेट की डिलीवरी नहीं होती, यहाँ बस एक जुए की मानद होता है कि जी अगर कीमत बढ़ गई है तो मेरा 10 रुपए प्रॉफिट बनता है, मुझे 10 रुपए दे दें। अगर मेरी कीमत कम हो गई है तो वो मेरा लॉस है, मैं आपसे कुछ वसूल नहीं करूंगा। सो दिस इज द known as future contract. Now let's see what is the difference between these two contracts. Let's say first of all look at the example what of the forward contract.